पुरुष है उसको खींचने वाली जो है प्रकृति है। The soul प्रकृति is माता the है। Purush. Soul is the Purush, male, and the one who attracts, that is Prakriti, the nature. The nature attracts that soul, the male soul. नेचर का दूसरा रूप जगदम्बा है। The second form of nature is Jagdamba. So in that way she becomes the first impure soul, is it? Who? In that way Gita Mata becomes the first impure soul. इस तरह से मतलब गीता माता ही पहली पतित आत्मा हुई, क्या पूछ रहे हैं? सतयुग से लेकर के त्रेता के अंत तक झूठी गीता का अस्तित्व नहीं होता। There is not the existence of Jhuti Gita, the false Gita, from Satyuga, from the beginning of the golden age to the end of the silver age. मर्ज होकर रहती है। It is in the merge form. She is in the जैसे merge form. जैसे धर्म पिताओं के आधार मूर्त और बीज रूप मर्ज होकर रहते हैं। As the Dharmapita means the religious father souls, they are there, but they are in the merge form. In the golden age and in the silver age, the religious father souls, the seed souls, they are in the merge form. In the same way, the false Gita is also in the merge form, in the beginning of the golden age to the end of the silver age. जैसे द्वैतवादी युग शुरू होता है। As the age of the two types of Copper age. copper age, from the copper age हाँ starts. जी, द्वैतवादी युग शुरू होते ही दो हो जाती है पत्नियां। As the जगदम्बा भी पत्नी है तो लक्ष्मी भी पत्नी है। Jagdamba also is the wife, and the Lakshmi becomes also the wife. As the copper age starts, up to the silver age, it is one, and it divides into two. That means it becomes Dvait. Okay, and दिति और अदिति। they are called, and there are two wives. I know, They Aditi become. and Diti and Aditi. Got the point? When Krishna becomes Vishnu, when Brahma alias Krishna becomes Vishnu. Brahma. Brahma Baba, it is said. Yes, Brahma Baba. Brahma alias Krishna becomes Vishnu, he becomes Vishnu. Then the role of Bap Dada begins, is it? Role of Bap Dada role of Bap Dada. will begin. Is it? Will it begin after Brahma becomes Vishnu? माने बाप दादा का जो रोल है वो तब शुरू होता है क्या, जब ब्रह्मा माने उर्फ कृष्ण जब वो विष्णु बन जाते हैं। जब ब्रह्मा विष्णु बन जाते हैं तब बाप बाप दादा का रोल दादा शुरू होता है। बाप दादा का रोल शुरू होता है क्या? अभी बाप दादा का रोल नहीं है। नाउ देयर इज नो रोल ऑफ बाप दादा नाउ। दिस इज बाप दादा। बाप दादा's रोल इज नॉट नाउ। Now is Ardhanarishwar role is going on. अभी तो अर्धनारीश्वर का रोल चल रहा है। ब्रह्मा बाबा जब जीवित थे तब बाप दादा का रोल नहीं था। When Brahma Baba was alive, then Bap Dada's role was not there. Okay, when Brahma Baba was alive, when you are asking me when Brahma Baba was alive, then Bap Dada's role was not on. मैंने वो पूछ रहे हैं, मैंने वो ब्रह्मा बाबा जब जीवित थे तब बाप दादा का रोल नहीं था या था? देयर वाज। Okay. शुरुआत से ही बाप दादा दोनों साथ साथ हैं। From the beginning only, both were combined. बाप के साथ ही बच्चे का जन्म होता है। शिव जयंती अकेली नहीं, बच्चे के साथ बाप का भी जन्म गाया हुआ है। इसलिए कृष्ण जयंती और शिव जयंती दोनों रात्रि के 12 बजे मनाई जाती है। The birth of both of them takes at once. Bap Dada's role is going from the beginning of the year. So Krishna Jayanti, that's Shiva Jayanti or Krishna Jayanti? कृष्ण जयंती भी रात के 12 बजे मनाई जाती है, शिव जयंती भी रात्रि के 12 बजे मनाई जाती है। In the midnight, the devotees celebrate the Krishna Jayanti. That is also in the midnight 12 o'clock. And Shiva Jayanti also they celebrate in the midnight. Means Shiva Jayanti, Krishna Jayanti. Both of that is celebrated in the midnight
बाप और बच्चे का जन्म साथ साथ है, father and the child, that they both take birth at once. It's together. at the same time or together. During Sakar Murlis, you're telling during Sakar Murlis, Baba was telling the Bap Dada role was during Sakar Murlis also. During Sakar. During Brahma Baba was alive, is it? Yes. Also Baba said that during when Brahma Baba was alive, then also Bap Dada's role was going on. Both of they are not separated. Their role is going together. In the beginning also, the Bap Dada are combined. Both of their births took place at the same time. But then Ram was not there, what? Because Bap Dada means Shiva plus Ram is Bap Dada is Krishna soul, what? वही बाप दादा राम की सोल तो वहाँ पर नहीं थी ना, ब्रह्मा जब जिंदा थे तब। शिव बाबा अकेले नहीं आते, शिव बाप अकेले आते ही नहीं, 3 मूर्तियों के साथ आते हैं। द फादर वो तब की बात बोलते जब ब्रह्मा जीवित थे, बीच में जब राम की सोल जीवित थे तो शिव बाप जब आते हैं तो राम बाप साथ आता है। शिव बाप जब आते हैं तब राम बाप भी होता है, ब्रह्मा भी होता है, विष्णु भी होता है, यस। तीनों तो हो गए। माँ के बगैर तो बच्चे का जन्म नहीं है, और बच्चे के साथ साथ बाप है। So without mother, the child is not there, and with the child, the father is also there. In the beginning, when the Shiva came, then three murti means 3 souls are there. Brahma's soul is also there, Ram's soul is also there, and the Vishnu soul is also there. मगर माता जी पूछ रहे हैं कि जब शरीर छोड़ दिए तो उसके बाद जब ब्रह्मा का पाठ चल रहा था तब वो बाप दादा, राम की सोल तो वहाँ नहीं थी ना, तब कैसे हुआ? राम की सोल नहीं थी, लेकिन बाप की सोल तो थी, काम करने वाले। But the शिव बाप तो था। Shiv Bap, the father Shiva was there. Ram's soul was not there, but Shiva's soul was there. But in the beginning, there were 3 souls. Got the point? Yeah, I'm not. But then you were telling about Sakar Murlis, Bap Dada's role was there. When the Brahma was alive, then Bap Dada's role was there. But Bap means there, the Shiv Bap. Shiv Bap, Baba is saying. Through that Bap Dada became Bap Dada. In the beginning, also the Shiva soul is there incarnated, then Brahma's soul is also there, Vishnu's soul is also there, and Ram's soul is also there. In the middle, Ram's soul was not there, but Shiva's soul was there. That's why Bap was there, Bap Dada is there. Got the point? So during Sakar Murlis also Bap Dada's role was going on. साकार मुरली जब चल रहा था तब भी बाप दादा का रोल चल रहा था, इसका मतलब पूछ रहे हैं, मतलब चल रहा था ना उस समय? चल रहा था, लेकिन ब्रह्मा को बाप का पता नहीं था, इसलिए मुरली में ही बाबा शिव बाप ने याद दिलाया कि ब्रह्मा कुमारी विद्यालय क्यों लिखते हो, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विद्यालय लिखो। Bap Dada's role was going on at that time also, and the Sakar Murli was going on. But Brahma didn't remember that. That's why Shiva's soul, it told in the Murli that why you are not writing Prajapita Brahma Kumari, Prajapita Brahma. We are writing only Brahma Kumari, Vishwavidyalaya. You got the point? Yeah. When the Sakar Murli was going on, at that time also Ram's soul was also came to the Yagna. Yeah. So Shiva's soul reminded the Brahma Baba through the Murlis that right Prajapita Brahma Kumari Ishwari Vishwavidyalaya. Because Prajapita is coming. Haan. When Prajapita came into the Yagna, that time. What does it mean? What does it mean? Ganga flows from Vishnu's foot and goes to Shankar's head. Shankar said, Ganga flows from Vishnu's foot and goes to Shankar's head. विष्णु के चरण से गंगा निकल करके शंकर Ganga से flows from Vishnu's foot and goes to Shankar's head. शंकर के सिर तक जाती है। विष्णु के चरणों से निकलती है गंगा और शंकर के सिर तक जाती है। इसका क्या मतलब है? गंगा वास्तव में
विष्णु की चरणों से नहीं निकलती है, गंगा निकलती है ब्रह्मा के कमंडल से। From the Kamandal, pot of Brahma. The Ganga comes from that, not from the Vishnu's foot. अब विष्णु के चरणों में गिरती है, And फिर चरणों से निकल करके फिर शंकर के मस्तक में आती है। it falls on the Vishnu's foot. It comes out from the Brahma's pot, means that is Kamandal, and falls on the Vishnu's foot. And through that foot, it goes to the Shankar's head. So what does that mean? उसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि गंगा जो है वो भक्ति मार्ग से कनेक्टेड है या ज्ञान मार्ग से कनेक्टेड है? It means Ganga is concerned with the Bhakti Marg, a path of devotion or to the path of knowledge, to which it is connected. बाप से कनेक्टेड है तो ज्ञान मार्ग से कनेक्टेड है। जब बाप से जुदा हो जाती है, जटाओं से बाहर आती है, तो भक्ति मार्ग की गंगा हो जाती है। When it is connected with father, then it is connected with the knowledge. Then when it detached from the father, it comes out from the Shankar's head. Means it comes down from the means it and go to the path of devotion. ब्रह्मा का मस्तक ही कमंडल है। Brahma ये कमंडल है, कमंडल। Brahma's head is the pot, that Kamandal. उस कमंडल से निकलती है और विष्णु के चरणों में गिरती है। Through that pot, it comes out and falls on the foot of Vishnu. When it is in the path of knowledge, then it was in the jata, means in the hair of Shankar. And when she leaves the knowledge, Ganga, then she falls from the head and from the बाबा ऐसे ही है ना? ब्रह्मा का मस्तक ही कमंडल है। बाबा शंकर की जटाओं का बता रहे थे, शंकर की जटाओं से भी बाहर आ जाती है। जटाएं कोई दूसरी थोड़ी है। तो ब्रह्मा प्रजापिता ब्रह्मा, हाँ, प्रजापिता ब्रह्मा जो है उसके मस्तक में जो ज्ञान घुमड़ता है, मंथन चलता है, वही जटाएं हैं। The Prajapita Brahma. Brahma means here the Prajapita Brahma. The knowledge that swirls in the head of Prajapita Brahma itself are the hairlocks from that hair and comes down. Means Prajapita Brahma's head is only that pot, that Kamandal, where the Ganga lives. And through when it is in the knowledge, she is in the knowledge, then she is in the head. When she comes out from the knowledge, then she comes out from the head and falls on the feet of the Vishnu. I want to ask, Mahakali's role is to cause doubts. Mahakali's role is to cause doubts. So does Mahakali's role started in 1976? Cast out? Mahakali's role is to cause doubts. Cast doubts, yes. So did it start from 1976? महाकाली का जो रोल है वो है माने डाउट क्रिएट करना, माने कॉज डाउट, माने डाउट्स मतलब शंकाएं उत्पन्न करना, डाउट्स उत्पन्न करना। हाँ। तो ये 1976 में 1976 से शुरू होता है क्या? हाँ। यस। स्थापना के साथ साथ यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। विनाश इम्प्योरिटी से होता है या प्योरिटी से? So with the establishment, the fire of destruction also ignited out. So it means the destruction takes from impurity or purity, through impurity or purity. Impurity से destruction होता है, through the impurity purity से construction होता है। तो 1976 में purity से स्थापना भी हुई in 1976 एडवांस पार्टी की, और impurity से destruction भी शुरू हुआ। In advanced party, the construction and the destruction also started from impurity, and through the purity the construction also. यज्ञ के आदि में भी कंस्ट्रक्शन के साथ ही डिस्ट्रक्शन शुरू हो गया। In the beginning of the yajna also, with the construction
the destruction also takes place simultaneously. हाँ जी, हाँ जी। Through the purity, the construction took place, and through the impurity, the destruction took place. दोनों माताएं थी यज्ञ में। The both mothers were present in the yajna. झूठी गीता भी थी, सच्ची गीता भी So थी। is through the, False Gita was there, and the so truthful is Gita through was the, also. the establishment and destruction taken place through the both Gitas. Is through the both Gitas destruction and establishment has taken place. दोनों गीताओं के द्वारा ही मैंने स्थापना और विनाश का कार्य है. हाँ जी। मतलब Yes. 76 में तो थे नहीं ना, हाँ? दोनों माताएं थी नहीं ना, हैं? 76 में तो थी नहीं ना दोनों माताएं। लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? आज एक ही माता ने दो लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? हाँ वो 76 में हुआ। तो फिर थी ना। In 76, Baba is Mataji asked that in 76 the two mothers were not there, no. So Baba said that the birth of Lakshmi Narayan took place in 76. गौरी भी थी तो काली भी थी। The Gauri means the fair one, as well as Kali. Kali means the dark one. Was there. Both were there at that time also, in 76 also. Both through the both matas, in the beginning of the yajna also the construction and destruction took place. In the 76 also both mothers were there. Oh, Jagadamba also was there. Jagdamba Ma was not there. कहाँ? वो माता जी पूछे 76 76 में जगदम्बा You माँ said भी both हुई थी. mothers were there. कहाँ? 76 में 76 में. कुशा माता तो लेके आई थी घर नहीं, अपने घर में। छोटी थी। पहले तो पहले तो काली नहीं होती ना, है? शुरुआत में थोड़ी काली होती है। नहीं, मैंने वो माता जी पूछ रही कि दो मैंने काली और गोरी दो माताएं कौन हुई मैंने 76 में. प्रेम कांता भी थी तो मम्मा भी थी। मम्मी प्रेम कांता पहले सरेंडर हो गई, हम्म। लेकिन सरेंडर थोड़े टाइम के लिए हुई, अल्पकाल के लिए निभाया। मम्मा ने लंबे समय तक निभाया। प्रेम कांता का मिलना थोड़े समय हुआ, अंश मात्र, और जगदम्बा का मिलन लंबे समय तक हुआ। प्रेम इसलिए कांता and मम्मी. जगदम्बा का मेला मनाया जाता है, महाकाली का मेला नहीं मनाया जाता उतना। इसलिए दो माताएं। इसलिए दो माताएं हैं। Both mothers were there. Mama was also there and Prem Kanta was also there. So Prem Kanta surrendered herself for the short time, and the Jagdamba for the long time she has surrendered. That's why in the path of devotion also the mela means the festival, whatever they celebrate in the path of devotion, they celebrate that for Jagdamba, but not for the Prem Kanta. Got the point? What's the difference between Krishna and Sri Krishna? कृष्णा और श्री कृष्ण के बीच में क्या अंतर है? कृष्ण देवता है तो उसके नाम से पहले श्री लगाना चाहिए ना। Krishna is deity, so before the name of him, Sri is there. That's why the Sri should be there because he is deity. Sri. So same with Ram and Sri Ram. ऐसे ही राम के लिए भी ना श्री राम. भी देवता है, सेमी देवता है, इसलिए उसके नाम से पहले भी श्री लगाना चाहिए। Then the Sri should be mentioned before the name of Rama also because he is also the semi deity. So all the one like Krishna, Sri Krishna, Ram, Sri Ram, Narayan, Sri Narayan, all same meaning, is it? That means semi-deities, the Sri should come before them. ने ऐसे ही राम श्री राम और कृष्णा श्री कृष्णा, नारायण श्री नारायण श्री नारायण, ये सारा ऐसे ही है ना. ब्रह्मा श्री ब्रह्मा नहीं कहेंगे, श्री शिव श्री शिव नहीं कहेंगे। It is not called like Sri Shiv, Yeah, Sri yeah, Brahma. only that, शंकर Krishna, श्री Ram शंकर and नहीं कहेंगे। Narayan will come Sri Sri. Yes, yes. But Shankar, Sri Shankar will be not be called. Yeah, I know. I want to know in Bhakti, I was just going into Bhakti. I saw the one article about
Sage Ribu. सेज Ribu. रिबू ऋषि के बारे में भक्ति मार्ग में उन्होंने So that is Prajapita, is it? Sage Ribu referred to वो Prajapita. रिबू ऋषि भृगु ने रिभु पैदा किए भृगु यज्ञ कुंड से। Ribu. the Bhrigu Rishi was there, Bhrigu saint was there who brought out those Ribus through the Yagya Kunda. Yagya Kunda means where we do the Yagya. Understand? And so when we say Shiv Shankar, then it is also said Shiv Shaktis. Okay, I want to know why, because when we say Shiv Shankar, that means Shankar emulates Shiv stage. Then why is it say Shiv Shaktis also? That means so I want to know why, because I have a friend who says that why is it Shiv Shankar then Shiv Shaktis also? शिव शंकर तो इसलिए कहा गया ना कि शिव तो शंकर में प्रवेश करते हैं, लेकिन प्रवेश करते हैं इसलिए नहीं कहा गया। शिव आकर के शंकर को आप समान बनाते हैं, इसलिए शिव शंकर कहा जाता तो है। शिव शक्ति क्यों कहा गया है? शिव शक्ति इसलिए कहा गया कि आत्मा स्वयं शक्ति स्वरूप होती है। अगर संपूर्ण 100% आत्मिक स्टेज में टिक जाए तो शिव प्रवेश करता है, उस समय आत्मा संपूर्ण नहीं है, लेकिन पुरुषार्थ करने के बाद जब संपूर्ण बनती है तो पहले नंबर की शक्ति वो आत्मा है। इसलिए शिव शंकर की जोड़ी है, शिव पार्वती की जोड़ी नहीं है। शिव शंकर को युगल कहेंगे, मुरलियों बोला। This is why there is a couple of Shiv Shankar and not of Shiv Parvati. It is said in the Murli, Shiv Shankar will be called a couple. यानी आत्मा जब पुरुषार्थ करती है तब वो शक्ति स्वरूप बनती है, शक्ति स्वरूप बनती है, लेकिन शिव जो है उनको शिव शंकर को आप समान बनाते हैं, इसलिए शिव शंकर कहा गया है। So the soul when it makes the effort, then it becomes the form of Shakti. When the soul has to make the effort, Shiva comes and makes Shankar equal to himself. This is why it is said Shiv Shankar. It is said Shiv Shakti because the soul itself is the form of Shakti. To make the 100% pure means Shakti. 100% pure means the Shakti. That's why it is called the Shiv Shankar. It is called Shiv Shankar, but it is not called Shiv Parvati. Shiv Parvati. Shankar Parvati. It is called Shankar Parvati, but not called Shiv Parvati. Because Parvati is the soul. You got the point? Parvati is the soul. The soul has to make the effort, and at first number the soul becomes the form of Shakti. That is the Parvati. That is why Shiv Parvati is not said. शंकर की सोल स्वयं ही सोल है जो शिव की पहली शक्ति बनती है। Shankar's soul is the first soul who become the Shakti form. Shankar's soul. Shankar is the first soul who become the form of Shakti. So when you say Shiv Shakti, also referred to Shankar. Yes. Yes. So when you say Shiv Shakti is Bharat Mata Shiv Shakti Avatar? What? It is said Bharat Mata Shiv Shakti Avatar means what? भारत माता शिव शक्ति अवतार का मतलब क्या है? हाँ, भारत माता शिव शक्ति अवतार ये अंत का नारा है। It is तो अंत होगा तभी तो आत्मा 100% प्योर बनेगी। It is the praise of the last time. So when 100% the soul will become pure, then it will become the Shakti form. So Bharat Mata means refer to the Vijayamala souls. Bharat Mata Shiv Shakti Avatar is referring to the Vijayamala souls. विजयमाला की आत्माओं के लिए ही कहा जाता माता है। कहा गया ना, तो स्त्री होलिंग हो गया ना, माने स्त्री चोला चाहिए ना, शंकर को थोड़े कहेंगे। Shankar is not called Mata, means it should be the female body. So like female and male, Shiv Shakti male.
शिव शक्ति नहीं है, पार्वती फर्स्ट शिव शक्ति। प्रैक्टिकल Practical first Shiv Shakti is the Parvati. It is said in one VCD it is said Trimurti Brahma, and then it said Brahma enters Jagadamba, enters Shankar and enters Vishnu. So Trimurti Brahma. ब्रह्मा एक सीढ़ी में ब्रह्मा एंटर्स इनटू जगदम्बा, ब्रह्मा जगदम्बा में एंटर करते हैं। Brahma. हाँ प्रवेश करते हैं जी। Trimurti Brahma. It is said Trimurti Brahma means it Brahma enters Jagadamba, Brahma enters Shankar and Brahma enters Vishnu. त्रिमूर्ति ब्रह्मा ऐसे कहा गया है ना। त्रिमूर्ति ब्रह्मा का ब्रह्मा मतलब भक्ति मार्ग में कहते हैं। इन द पाथ ऑफ डिवोशन इट इज सेड, Path of devotion. इट इज नॉट इन द पाथ But ऑफ does Brahma soul enter Vaishnavi Devi? You know the वैष्णवी देवी के अंदर ब्रह्मा की सोल प्रवेश करती है क्या? छोटी माँ नो, द स्मॉल मदर, छोटी माँ। ओम राधे। ओम राधे मम्मा विल एंटर इनटू द वैष्णवी शक्ति। does Shiva enter junior mother? No? Shiva enters इनटू junior mother. Does Shiva enters junior mother? छोटी माँ में प्रवेश जूनियर करते हैं क्या? मदर शिव क्या छोटी मम्मी में प्रवेश करते हैं क्या, पूछ रहे हैं। प्रैक्टिकल पार्ट जो है वो विष्णु जो बजाता है, प्रैक्टिकल पार्ट शिव की सोल बजाती है वैष्णवी देवी में, सहन शक्ति का पार्ट ब्रह्मा में शिव की सोल बजाती है या ब्रह्मा बजाता है, तीसरे नेत्र क्लैरिफिकेशन का पार्ट शंकर बजाता है या शिव बजाता है, क्या जवाब है? What is the answer of this? That Vaishnavi Shakti plays the practical part. The practical part plays Shiva or Vaishnavi Shakti. Or Brahma, in Brahma, the power of tolerance is there. So that tolerance power is Shiva plays or the Brahma, or in the Shankar. So in the Shankar also the third eye is through the Shiva or through the Shankar. What is the answer of that? Who do the play? In Brahma, Shiva played the tolerance part. In Shankar, Shiva played the third eye of knowledge. So another question is In the Vaishnavi Shakti, Vaishnavi, the practical part. The practical part is played by Shiva or through the Vaishnavi Shakti. but so far in advanced knowledge it is never said Shiva played. It is never said that Shiva enters Vaishnavi Devi. It is never said. लेकिन ऐसा तो नहीं बोला गया है ना कि मैंने शिव जो है वैष्णवी शक्ति में प्रवेश करते हैं। करण करावनहार कौन है? The one who do and makes others to do. Who plays that role? पुरुष कारण Shankar. Who is शंकर करण करावनहार है। who is that? Who plays that role? Who do himself and makes others to do. Because it is said Shankar compels others to do. He himself do and he compels others also to do. शंकर के लिए बोला गया ना कि वो अपने खुद करते हैं और दूसरों को फोर्स करते हैं करने के। शिव बाबा करण करावनहार है। करण कराना। नो, शिव बाबा करण करावनहार है, शंकर की सोल नहीं। not the soul of Shankar. Because it is said Shankar becomes the Baba. शंकर ही बाबा बनते हैं ना, तो शंकर ताऊ है, बाबा है नहीं। Baba, he shapes the head. no, ताऊ को क्या? है? ताऊ means the ताऊ father. elder brother of father. हाँ, Shankar is called the elder brother or father. Elder brother. बड़ा चाचा चाचा। Shankar is ब्रह्मा not से भी called बड़ा Baba. विष्णु, विष्णु से भी बड़ा शंकर। Shankar is not थ्री called ब्रदर्स, हाँ, थ्री Shankar- ब्रदर्स। brothers। ब्रह्मा से बड़ा विष्णु, विष्णु से बड़ा शंकर, तो elder brother elder brother. Shankar is the elder brother. After Brahma,
Vishnu. After that Vishnu, above Vishnu there is Shankar. So Shankar is the elder brother. Shankar is not Baba. So Shiv Shiv Baba. Baba, grandfather. Shiva. Shiv Baba is It's the not grand- Shiva. So he is not the Shankar who do himself and makes others to do. Shiv Baba is He is Shiv Baba. I want to ask one Avyat sentence says that this ordinary form will disappear. This ordinary form will disappear. His ordinary form. Ordinary form will disappear. इनका साधारण तन जो है वो अदृश्य हो जाएगा. ये साधारण रूप जो अभी देखते हैं वो अदृश्य हो जाएगा. The body, और- the form और becomes. प्रत्यक्षता के टाइम पर असाधारण रूप प्रत्यक्ष हो जाएगा. At the time of प्रत्यक्षता now you are seeing the form ordinary body that will vanish. At the time of revelation, the extraordinary form will be revealed. Revelation, she meant. Revelation. So during the revelation He has extraordinary form, not ordinary form. so That will his be the features special. will change. फिर उनके जो स्वरूप जो है वो चेंज हो जाएगा. हाँ वो जो अभी साधारण दिखाई पड़ता है वो फिर असाधारण दिखाई पड़ेगा. Now you are seeing the ordinary. You are seeing, it is seen ordinary. At that time it will be not ordinary. It will be special. Or special one. So Vyakt his stage features है all ordinary. will change. I read in one. Vyakt stage means the corporeal form. Corporeal form is the ordinary. At that stage, in corporeal state, that will be extraordinary. Extraordinary. Plus anything. Finish it. It say in one Avyat Maniya that Bab Dada couldn't bear to hear the distress of others calling for. What? It is said in one Avyat Mani that Bab Dada couldn't bear to hear the distress. Distress means sorrow of others calling for peace. Bab Dada cannot hear. Yes. Cannot bear. Bab Dada. Cannot bear to hear the sorrow of others calling for peace. Means the Bab Dada don't want to hear. Cannot hear. He Cannot hear. bear. Cannot bear. Bear Bear. means cannot सहन take करना. it. Yes. To hear the sorrow of others calling for peace. जो शांति के लिए पुकारते हैं उनके जो उसको मैंने सहन नहीं कर पाते हैं बाबा की. मैंने शिव बाबा उसको सहन नहीं कर पाते. दूसरों के जो दुख दर्द है दुख से जो पुकारते हैं उसको सहन नहीं कर पाते हैं. ऐसे बाप दादा. Yeah, Bab Dada. But that means Baba always say that we shouldn't take sorrow, hear sorrow, take sorrow. So, but Bab Dada, that means he is feeling the sorrow, is it? Is he feeling the sorrow by telling like this? मैंने बाप दादा को ऐसे बोलते हुए मैंने दुख अनुभव होता है कि मैंने वे बच्चों को बोलते हैं कि तुम दुख मत लो. What is it? Duk. Bab Dada is feeling the sorrow. I want to know, is Bab Dada feeling the sorrow? बाप दादा को क्या दुख की अनुभूति होती है कि ऐसे बोलते हैं मैंने दुख लगता है क्या? शिव बाबा को दुख अनुभव नहीं होता है. बाप दादा तो रामकृष्ण की आत्मा है. बाप दादा है ना. बाप माने आत्मा, दादा माने आत्मा, शिव बाबा माने परम पिता परमात्मा. अलग है ना. Bab Dada feels sorrow, but Shiv Baba don't feel the sorrow. Bab Dada means the souls of Ram and Krishna. Bab Dada, here both are the souls.
So they're feeling the sorrow of others. वो उनको दूसरों के दुख की अनुभूति होती हाँ है. जी, हाँ जी, हाँ जी. Yes, they feel the sorrow of others. I don't have any more questions. I और just कुछ want to show this to Baba. This one is Mahakali. महाकाली. Mahakali. चंद्रमा भी है, तीसरा नेत्र भी है, Third eye is also there. लेकिन The ये moon is तो also there. हाँ, यह किसी और देवी का चित्र भी है. Other deities. इसमें गोरा figure is चेहरा also दिखाया है, there. काला चेहरा होना चाहिए. White face is there, but it should be black face. Okay, I don't have any more questions. और questions नहीं है. Some water. Must have collected all these questions for a while. You must have been writing After about I it came all the from time. 2009, I came back after I met Baba 2009. So whenever I read every day the Murlis, whatever questions come in my mind, I write. So I write till I meet Baba the next visit. You before meeting Baba, you No, you see, I met Baba last 2009. So after when I go back home, so I start reading as usual every day. I read Murlis. So whatever questions come up in my mind, I write. Yes. I write till we have 2 pages till I meet Baba. They were very intricate questions, weren't they? From the वो 2009 के बाद जब से बाबा से मिले उसके बाद में वो जब रोज रोज मुरली सुने तो वो सारे क्वेश्चन जो भी आया 2 पेजेस क्वेश्चंस लिख कर हुआ. अच्छा. You have completed those 2 pages? At least few pages, yes. Sometimes I ask questions, I write down, and then after a few days I get the answer through Baba's Murlis, so I don't ask. कभी कभी तो वो लिख करके रखते हैं उसके बाद में थोड़े दिनों में फिर मुरली में उसका जवाब आ जाता है तो उसको वो नहीं पूछे. अच्छा, अच्छा, अच्छा. Yeah, I got one more question to ask, because this one. और एक क्वेश्चन एक क्वेश्चन When we say Brahma means the body must be female. ब्रह्मा जब बोलते हैं तो उनका शरीर जो है वो स्त्री का चोला होना चाहिए ना. स्त्री का शरीर है क्या? भाव स्वभाव से कनेक्टेड आत्मा है. भाव स्वभाव संस्कार इसका कनेक्शन आत्मा से है, whatever शरीर से उतना नहीं. the feelings, the expression, all these are connected with the soul, not for that. So not necessarily Brahma means must be a female body, no. मैंने ये जरूरी नहीं है कि ब्रह्मा बोलने से स्त्री चोला ही होना चाहिए. होना चाहिए, लेकिन कुछ हिसाब किताब ऐसा है, उनका पुरुष चोला है. इसलिए जब वो पुरुष चोला छोड़ करके स्त्री चोले में प्रवेश करेंगे तब उनकी पूजा होगी. Brahma means he must have the female body, but he has some karmic accounts like that he has got the male body. That's why he is not praised on in the path of devotion on that body. When he incarnates into the female body, then he is means he got worship in the path of devotion. So you see, I mean, it is said in Murli, Brahmins came from Brahma. It is said Brahmins came from Brahma. So the body must be female. Like, मैंने माता जी बोल रहे हैं कि मैंने एक मुरली में जो दिया गया ब्राह्मण्स जो है वो ब्रह्मा से ही आए, तो ब्रह्मा जो है वो फीमेल में होना चाहिए. पहला ब्रह्मा जो है वो फीमेल के द्वारा बनता है. पहला ब्राह्मण जो बनता है वो फीमेल के द्वारा ही तो बनता है. फर्स्ट ब्राह्मण इज
He becomes Brahmin through the female body. What about You got that point? yeah, Fir- the first Brahmin. First Brahmin, he got the female body. Yes. What about after 1998, Jagadamba left the yagya? So were Brahmins born? Because there were no Brahma there, only Prajapita Brahma is there. Yes. So I want to know, were Brahmins born after 1998, after Jagadamba Ma left the yagya? ब्राह्मण्स जो है वो 1998 में जब जगदम्बा यज्ञ को छोड़ दिया तब प्रजापिता तो अकेले ही थे, तो उस समय में ब्राह्मण्स नहीं हुए क्या, मैंने उस समय में ब्राह्मण क्या नहीं आए क्या, कुछ जन्म नहीं लिए ब्राह्मण्स का क्या लिए प्रजापिता ब्रह्मा ही। जगदम्बा ब्रह्मा की बच्ची, ब्रह्मा गया तो ब्रह्मा की बच्ची आई और ब्रह्मा बन गई। जगदम्बा ब्रह्मा की बच्ची। हाँ, जगदम्बा was the child of ब्रह्मा। So when मैंने जब वो जगदम्बा गई तो जगदम्बा गई कहाँ? यज्ञ छोड़ घूंघट के अंदर है, गई कहीं नहीं। ब्रह्मा गया तो जगदम्बा घूंघट के अंदर है, अप्रत्यक्ष है, बच्चों के सामने प्रत्यक्ष नहीं है। When Brahma has gone, then Jagdamba came. When means Jagdamba has not gone. She is in the घूंघट में है, the cover, on the cover. Beside पर्दे के अंदर है, in the curtain. in the curtain. कर्टेन In the है। curtain. Jagdamba is in the curtain. She has not gone. Left the yagya, like Jagadamba left the yagya PBK. I'm talking about PBK, sir. Jagadamba left the yagya in 1998. हाँ 1998 में जगदम्बा ने तो यज्ञ छोड़ दिया ना। हाँ, यज्ञ छोड़ दिया ये भी नहीं कहेंगे, वो अपना पार्ट बजा रही है जो उसे बजाना है। She is playing her role. What she has to play, she is playing the role. She हाँ, has लेकिन left the yajna. पर्दे के अंदर है, But she is inside the curtain, beside the curtain. घूंघट के अंदर है। She is in Because the for Brahmins to born, he must be veil. She is in the veil. Veil, no? veil. Okay, veil. She is in the veil. Because for PBKs to be born as Brahmins, they must be a Brahma practically, you see. Because in the Yagya, no Brahma now. In PBK, after 1998, Yogini came, she is Brahma, is it? नहीं, No. No. So there is no माने practical. पीबीकेस का अगर जन्म हो रहा है तो ब्रह्मा तो रहना चाहिए ना, बोल। है ना, निश्चय पत्र में ब्रह्मा तो लिखाया जा रहा है जगदम्बा का नाम। In the निश्चय पत्र you told, no? The Jagdamba's name is सरेंडर mentioned. लेटर्स में, Yeah, there is निश्चय no पत्रों में। scripture. But In the shouldn't, confirmation letters there. shouldn't be practically there, no? In the PBK Yagya, Brahma must be there, is it? प्रैक्टिकली रहना चाहिए ना ब्रह्मा को यज्ञ में। बता दिया ना, व्यक्त वाणी में भी बता दिया, घूंघट में है। In the Avyaktvani also it is told that Jagdamba is in the veil. So still Brahmins are born there. बाबा के ऊपर जो भी केस चल रहे हैं, प्रैक्टिकली चल रहे हैं, जो भी केस चल रहे हैं वो प्रैक्टिकली चल रहे हैं। उन केस में साथ अभी भी तो जगदम्बा का है। Whatever cases are there on Baba, in practically on those cases Jagdamba is also included. She's with him. इनकम टैक्स का केस है, उसमें भी जगदम्बा है। In the case of income tax also Jagdamba is there. So Jagdamba is practically Practically there. she is in the veil, means she has not left the और world. निश्चय पत्र लिखाए जाते हैं, वो भी जगदम्बा को नहीं मानेगा तो जाओ। I No, didn't say no, I am telling. I didn't say left the Okay. world, just left the yagya. Yes, left the yajna. She has left the yajna, but she, like Dada Lekras Brahma, she has not left the. She hasn't left Body. the yagya. She's there, but she's in a veil. She hasn't left the yagya. She is practically, she is but playing she's playing her her role. part. She is playing her, what she has to play. She is playing the role. She is playing that role. But she is not in front of the children. But From the children, that's what I'm asking. but in the cases of Baba also, she is practically. As long as she's involved, so Brahmins are born.
Okay, no more questions. There's a really hot water bottle there that I was playing with. It's a hot water bottle. Hot water bottle. And it's between हॉट here. वाटर गर्म पानी का बॉटल है ना बाहर. You kept the pin there. Doesn't fall out. He needs to make good massage on his shoulders. With some good thumbs and some Ointment. ointment. Traveling hot bed. Traveling? With Traveling with hot bag. Yes, that's good. But it would be better if he had a bit of shoulder massage here. मसाज करने से अच्छा रहता है. क्या और कुछ निकाल रहे थे? Anything more you are searching? You are Can ask, is it? Huh? Can ask some more questions. क्या और कुछ पूछ सकते हैं क्वेश्चन? Yes, you can ask some more questions. Because I feel Baba is tired, is it? बाबा थक गए होंगे ना, बोल रहे हैं. मैं सोच रही हूँ बाबा थक गए होंगे. 4 घंटे क्वेश्चन है करते हैं तो तब नहीं थकते. यहाँ तो 2 आदमी बैठे हुए हैं. Outside the 4 hours they ask the questions. Then Baba don't try. Then here the 2 persons are there. They are in the outside in the mini mothers. They ask me questions. Sorry. This one. This one in VCD 540. It is said Brahma remains in a very powerful remembrance when he enters Gulzardadi. गुलजार दादी में जब ब्रह्मा प्रवेश करते हैं तब वो बहुत पावरफुल याद में रहते हैं. So when he is in Ram, so he must be having a powerful stage too. जब वो राम में रहते हैं तब भी उसी पावरफुल स्टेज में रहते हैं. क्या कुछ नहीं. वो पावरफुल दिखाई पड़ते हैं आँखों से, क्योंकि सभी इंद्रियां जो सूक्ष्म शरीरधारियों की होती हैं वो ज्यादा पावरफुल होती हैं. और बीज रूपी स्टेज में वो पावर देखने की चीज नहीं है. शिव बीज है, शिव बिंदु है. तो ब्रह्मा में प्रवेश करता है तो पता भी नहीं चलता कब आता है कब जाता है, इतना हल्का होता है. ब्रह्मा की सोल तो सूक्ष्म शरीरधारी है, वो हल्की फुल्की नहीं है और पावरफुल है. तो वहाँ पावर देखने में आती है आंखों में. इंद्रियों में भी पावर देखने में आती है भूत प्रेतों की, लेकिन रामवाली आत्मा में संग के रंग से बीज रूप बन जाता है. वो देखने की चीज नहीं है, हल्का फुल्का रहता है. In both cases it is different. Brahma he is in the subtle form. So when he enters into the Guljar Dadi, means powerful. Powerful means it can be seen through the eyes and through all the organs. We can say that is powerful soul. So when he enters into the Guljar Dadi, it is seen that is powerful. But when he enters into the Ram's soul, then he enters into the seed soul. So it comes into the contact of the seed soul. That's why it is not seen. The power is not seen. He becomes seed as well. He becomes seed. Yeah, so Brahma becomes seed also. So subtle body means subtle body is the powerful body. Subtle body has the power. When he is in Ram's body, he becomes seed also. He has the seed stage also. उनका भी बीज रूपी फॉर्म बन जाता है ना जब राम वाली आत्मा में प्रवेश करते हैं. Yes. Okay, if he has the seed stage, why is he interfering in advanced knowledge? अगर उनका बीज रूपी स्टेज बन जाता है तो वो क्यों बीच बीच में इंटरफेयर करते हैं? वो इंटेलेक्ट की बात है, इंद्रियों की बात नहीं है. That is the matter of intellect, not the matter of organs. ऑर्गन सूक्ष्म शरीरधारियों के पावरफुल होते हैं, इंटेलेक्ट नहीं पावरफुल होती है. His intellect is not powerful, but the organs are powerful. So Got the point? seed stage means is not the intellect, is it? Not through the intellect he is powerful. The सूक्ष्म शरीरधारी शरीर से पावरफुल Through होते हैं. his subtle form only he is हाँ, powerful. only through the subtle form only he is powerful. That power is seen in the Guljar Dadi.
but because she is not in the seed form. But when he enters into the Ram's soul, the Ram soul is in the seed form. When he comes in the contact of seed form, he also attains the seed form. So that power is not seen in the Ram's soul. Through that, the It's power not is in the intellect. and it is not he interferes because it is not the matter of intellect. His intellect is not powerful. His body, subtle body is powerful. Only the subtle body is Only the subtle body is the power. not the intellect. Yes. गुलजार दादी की आंखों में ही सिर्फ नहीं पावर देखने में आती है, पूरा चेहरे में भी पावर देखने में आती है. In the Guljar Dadi, the power is not seen only through the eyes, but through the entire face also the power is seen. You can see the power through the entire face also through the Guljar. That not happens here. हाथ पाँव में भी पावर होती है, 14 घंटे तक बैठे रहते हैं ज्यों के त्यों. 14 hours they sit in the same position. They sit in the 14 hours also. In the hands and in the legs also, in the whole body also they get that power is seen. You got the point? Even Bapdada gets up at the flag raising, Bapdada gets up and walks. So that much power is there for him to walk in that body. Yes. वो मैंने बाबरा उठ करके जाते हैं, झंडा फहराते हैं, चल करके जाते, इतनी शक्ति है कि मैंने वो शरीर को चला के ले जाते हैं. Yes. I've seen Brahma's face in Baba. When I first came, I saw Brahma's face. The subtle face was coming and going in Baba's on the television. I could see. In the Guljar Dadi. No. In the Baba. Yeah. बाबा में भी जब वो पहली बार आए थे तब मिले थे तो उनने सूक्ष्म शरीरधारी ब्रह्मा को देखा, बोल रहे हैं बाबा के अंदर में आए और गए. जो आपकी भावना ने देखा. That is your emotion. Oh, that was helpful when I first came. That's my emotion. That's my emotion. Yes, that's your feeling. That you are feeling. That's your emotion. So I didn't really see it. Is that what he's saying? तो उन्होंने नहीं देखा. That what you said? Is he saying that I didn't really see it? हाँ, It's उन्होंने just- सचमुच में नहीं देखा. मैंने आप ये बोल रहे हैं कि उन्होंने सचमुच में नहीं देखा बोल रहे हैं. उनकी भावना ने देखा. Your feeling has changed. Emotion has changed. So if you have those, if you see the subtle form, that's emotion. You're not actually seeing the subtle form. Because I used to see Brahma Baba a lot when I was a BK. So is Baba saying that's all emotion? I'm not actually seeing. You have seen in the big. What you are saying? You have seen the When I was big. in the BKs, I used to see Brahma Baba's face a lot. His subtle form, In the- subtle face. Mm. You have to see in BK. You have seen the subtle form of Brahma Baba. See, used Yes, to when see. I was sitting in meditation, I would see Brahma Baba. ब्रह्मा बाबा को जो याद में बैठा हुआ वो दिखाते हैं ना बीके में, तब उन्होंने वहाँ पर ब्रह्मा बाबा के सूक्ष्म शरीर को देखा है, तो बोल रहे हैं कि ये मतलब सच नहीं है क्या. It's all You are emotion. asking that it is not true. वही भावना. Is Baba saying that's all emotion? Yes, Baba is saying that. But then in Sakat Murli it is said now, I read Sakat Murli said when you see Brahma you will get angry. साकार मुरली में ये बोला गया जब तुम ब्रह्मा को देखोगे तो तुमको गुस्सा आ जाएगा. You will get angry. When you see Brahma you will get angry. When you will see Brahma you will get angry. It is When you see Brahma you will get angry. जब तुम ब्रह्मा को देखोगे तो तुमको गुस्सा आ जाएगा. ऐसा साकार मुरली में है. It is stated. दुनिया वालों को गुस्सा आता है, हमें क्यों गुस्सा आएगा? The worldly people will feel like that. Why we will feel? It is for worldly people that. But then Baba says you shouldn't keep his picture in front of Yeah, you. I am very sure no PBKs keep his picture. Whose Do picture? you keep Brahma's Brahma picture? Baba. Brahma, nobody will keep what? Who will keep Brahma Baba's picture after becoming a PBK? ब्रह्मा का चित्र You रख. don't have to keep his picture.
ब्रह्मा का चित्र क्यों रखेंगे? ब्रह्मा का चित्र रखेंगे तो हम तो उनका चित्र नहीं रखना चाहते। माता जी I'm पूछ very रहे sure, हैं। I'm very हाँ। sure, Think it's I'm very sad, sure no PBK will keep Brahma. मुझे ये बात का पक्का है कि कोई भी पीबी के ब्रह्मा का चित्र तो नहीं Actually, रखता I did होगा। have- तो चित्र को देख करके When I गुस्सा आ showed जाए, you. ऐसे कोई रखते हैं रखते हैं, कितने लोग रखते हैं, मैंने तो बहुत देखा है। तो जो पूरा ज्ञान नहीं है तो रख रहे हैं। रखते हैं। in the Shall internet we full show knowledge, if full knowledge is not there, PBKs also Also keep keep picture with them. एडवांस पार्टी गीता पाठशाला में ब्रह्मा का चित्र रखा रखते हुआ हैं, कई जगह। रखते हैं। In the So Gita many- Pathshala also they keep the Brahma's picture. In Gita Pashala. In Gita Pathshalas also, because in the one whose intellect has not filled with the knowledge, they will keep them picture. But do you keep enough for you to see Brahma? Well, I did have a couple, but I threw them out. After, When we went after through all meeting our Baba, rubbish, we threw them out. after meeting Baba, you don't keep anymore, right? Well, I did have, that's what I'm saying, I didn't throw them out then, but I have thrown them out now. It's not that I see them, they're just in a cupboard, you know, It's closed stashed down. अरे वो away. ब्रह्मा का चित्र आप रखते थे क्या, पूछ रहे हैं उनको माता जी को। तो माता जी बोले कि मैं पहले रखती थी, अभी तो वो कपबोर्ड में रखा हुआ है अंदर ड्रायर के अंदर में ब्रह्मा का चित्र, अभी तो नहीं रखती हूँ। It is said in one Visiddhiya that when Brahma Baba was alive and he was running the yagya, it is not a household pattern. मैंने एक मुरली में बोला गया कि जब इन मुरली इट इज No VCD, इन वीसीडी इट इज advanced knowledge. ब्रह्मा बाबा जब यज्ञ चला रहे थे, जब जिंदा थे, तब क्या वो प्रवृत्ति मार्ग का कार्य नहीं चल रहा था? वो चल रहा, कार्य नहीं चल रहा Not a household pattern. था। हाँ, वो कार्य नहीं, मैंने वो प्रवृत्ति मार्ग नहीं था वो, ऐसा मुरली में बोला गया, मैंने वो वीसीडी में बोला गया उसमें। उनकी प्रवृत्ति किसके साथ थी? With whom his Because Radhe is with not, whom, हाँ, with whom his household उनकी बच्ची partner. है। because Radhe is actually his daughter, Yes. so it's not a household part. Yes, इसलिए वो प्रवृत्ति मार्ग का पार्ट नहीं है। अभी भी ब्रह्मा कुमारियों को प्रवृत्ति मार्ग का पाठ कहाँ है? Sannyas. Now also the Brahma Kumaris are Yeah, of not course, no, but I want to know Brahma Baba's time is not a household part because Radhe is his child. Yeah. Baba is saying that Brahma Baba's time, the No household part. But then Radhe is his partner, what? I mean, his soulmate, is it? Brahma Baba's soulmate is Radhe, is it? soulmate. Soulmate, I mean, like Lakshmi Narayanan, like, Junior Mother and... हाँ, मैंने उनकी जैसे जोड़ी बताया गया ना ब्रह्मा बाबा के साथ में Radhe. ओम राधे सरस्वती का, जैसे लक्ष्मी नारायण, ऐसे मैंने उनकी भले डॉटर है, उनकी बेटी है, लेकिन उनके साथ में उनको जोड़ा गया, जैसे ब्रह्मा के साथ में सरस्वती है, ओम राधे सरस्वती। तो उससे क्या होता है? बाप के साथ बेटी नहीं बैठ सकती? With father, daughter cannot sit. It does not matter because daughter can be sit with the father. I don't understand what you say. Means you are saying as the Lakshmi Narayan, the Brahma and the Om Radhe Saraswati. Is a Jodi, what? Jodi, that Jodi you are telling, that Jodi can be, it is not the household part, but with the father, the daughter can sit, the daughter can be with the father. It is mentioned like that. So it's not a household part. It is, Baba is saying that it is not the household part. But the Jodi what should be household part. But Jodi is name like Lakshmi Narayanan and Jodi, so it is a household जोड़ी part. का मतलब ही होता है ना, मैंने जोड़ी कहा गया है, लक्ष्मी नारायण की जोड़ी, ब्रह्मा और सरस्वती की जोड़ी, जोड़ी का मतलब ही होता है ना कि वो प्रवृत्ति मार्ग का है। जोड़ी का मतलब पति पत्नी, Oh, Pati Patni. They are not Pati Patni. Husband and wife. They are not. Husband wife, they will be जोड़ी means the husband and wife, but they are not the जोड़ी. So in Satyug they are Jodi. In the मैंने सतयुग में वो जोड़ी बनेंगे, हाँ सत्य बनेगी। Oh, Satyug Jodi. in the golden age, in the सतयुग। अंदर की भावना की बात है। उन्होंने सहयोग दिया, पूरा असिस्टेंस में रही, उन्होंने जितना सहयोग दिया, जितना फॉलो किया, उतना और किसी ने फॉलो नहीं किया। इसलिए जैसे नारायण को लक्ष्मी जितना फॉलो करती है, जितना प्यार करती है, उतना और कोई नहीं प्यार करता। सच्चा प्यार और कोई नहीं दे सकता। ऐसे ही जितना सहयोग मम्मा ने बाबा को दिया,
उतना और कोई नहीं दे सकता है। It is the एक्ट के आधार पर वो उनकी सहयोगी शक्ति बनी। it is based on the act. She become the Jodi. फॉलो करने की बात है। She followed him completely. She followed him completely because as much as she has given the helping hand to Brahma, that much nobody has given. As much as the true love that Lakshmi has given to the Narayan, that nobody has given. That's why, according to that act, according to that feeling, it is the internal feeling, not about external thing. Based on that feeling and based on that cooperation, that they have cooperated so much to Brahma. To Brahma, Om Radha Saraswati has cooperated so much, even helping hand to Brahma. On that basis, means according to her feelings, her emotions, her attitude, her action towards the Brahma, she has become the Jodi. That's why they both become the Jodi. मम्मा ने ब्रह्मा बाबा का कभी भी अपोजिशन नहीं किया, किसी बात में भी अपोजिशन नहीं किया। Mama has not opposed Baba at any time. She followed completely to Brahma. Mama. Lakshmi also followed completely to Narayan. भाग्यकारी, वफादार, फरमानबरदार, ईमानदार, चारों गुणों में फर्स्ट क्लास। She was first class in all the 4 qualities. It is obedient, loyal, subservient, honesty. But that was in the beginning. It's not now. She's Yeah, because of Satyavati shooting, wasn't it? It's the shooting of Satyavati. वो तो सत्युगी शूटिंग हो गई ना। हाँ जी। Yes. You got the point? प्रश्न नहीं बोल रहे हो गया? बोल रहे हैं और कोई प्रश्न नहीं। जी।